Hello everyone and welcome back. Now today I am going to start a new lecture series on linear algebra. So which is one of the most important in mathematics because इसका जो uses है वो हमें engineering mathematics, then graduation level, master degree level and in any competitive exam you will see the questions from linear algebra. Okay, but before you start linear algebra I'll suggest you kindly you go to the you finish matrices first. So all the lectures of matrices I have already uploaded. Okay, so one by one you kindly go through it because linear algebra में हमें इन बहुत सारा टॉपिक में जो matrices है उसका uses हमें यहाँ पे मतलब मिलने वाला है. So for that particular thing, so kindly you finish matrices first. Now let us come to the definition of linear algebra. What is linear algebra? So linear algebra एक कोई मतलब टर्म नहीं है. सो इससे ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, इसका अंदर मतलब अंडर में बहुत सारा चीज आएगा. ओके, सो व्हाट इज लिनियर अलजेब्रा? इट इज नथिंग बट ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स व्हिच डील्स विद वेक्टर्स. सो हमें मालूम है व्हाट इज वेक्टर्स, देन मैट्रिसेस, देन फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल मैपिंग्स. ओके, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट डायमेंशनल स्पेसेस जहाँ पे रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या तो कोई अलग अलग स्पेस यहाँ पे आएगा. And then as well as linear mapping between such spaces. Suppose a mapping between natural number to real number. Okay, then mapping between a set of integer to set of real number or complex number. So such type of relation we'll see under this particular topic, what linear algebra. Okay, and we can use this linear algebra in varieties of branches like pure mathematics, applied mathematics. Okay, in engineering, the natural sciences, mathematical physics. So बहुत सारा जगह में linear algebra का uses है. Now there are some branches of linear algebra also. Mainly we have three branches: elementary linear algebra, then advanced linear algebra, and then what applied linear algebra. So एक एक करके हम लोग समझेंगे what is elementary linear algebra, उसका अंडर में क्या आएगा, then what do you mean by advanced linear algebra and what is applied linear algebra. Okay, now first go to elementary linear algebra. So this is the basics of linear algebra. यहाँ पे हम लोग जो स्टार्टिंग से हम लोग यहाँ पे सब चीज देखेंगे. बाइनरी ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ बाइनरी ऑपरेशन, ओके, देन सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, रिलेशन, फंक्शन. सो ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, ऑल दोस कॉम्बिनेशंस विल कम इन एलिमेंट्री linear algebra. Okay, now in this particular part we'll see what simple matrix operation. So matrix you all know. So matrix operation, when you talk about matrix operation, then it comes to our mind that matrix addition, multiplication, okay, inverse, adjoint. So those type of things you'll see here. Then various computation that can be done in a system of linear equation. So system of linear equation. So you already know that in system of linear equation sometimes you solve a system of linear equation by varieties of method, Cramer's rule, solved by matrix method, then Jordan method, Gauss-Jordan method, Gauss elimination method. Okay, several methods are there, and you'll find all these lectures under the in the playlist matrix and determinant. And then certain aspect of vectors. So vectors also you know, okay, and some important term associated with elementary linear algebra that we are now discussing. Now scalars. Linear algebra में हमें ये सब term frequently मतलब देखने को मिलेगा. Scalar, vector. Then the main topic is vector space that I'm going to explain very soon. So scalar क्या है, vector क्या है, then matrix, this type of term we are regular basis will get in this part what linear algebra. Now scalar, we all know what is scalar. Scalar is a quantity which has only magnitude, okay, but there is no direction. But in linear algebra, we will not talk about this magnitude, direction, all this thing. In vector space, when you talk about scalars, so it will mean that some real numbers or sometimes some complex number also. Okay. Generally, scalar means what? Only magnitude, but there is no direction. But it is an element in vector space which is we can use. Now, what is vector space that I am going to discuss in next few minutes. Now, in linear algebra, whenever we talk about vectors, so vector मतलब यहाँ पे generally क्या होता है, रियल नंबर होता है, और कभी कभार कुछ एक दो प्रॉब्लम होता है जहाँ पे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेंगे.
Now coming to vectors. So vectors is what? Again is quantity but which has both magnitude and direction. तो यहाँ पे जो हम लोग वेक्टर स्पेस पढ़ेंगे, तो वेक्टर स्पेस जनरली क्या होता है? एक सेट. सो उस सेट के अंदर में जितना भी एलिमेंट होगा, दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट? वेक्टर्स. ओके, हियर द एलिमेंट्स ऑफ द वेक्टर स्पेस आर टर्म्ड एज व्हाट? वेक्टर्स. And then matrix. So matrix is very simple. You all know what is matrix, right? So matrix is a rectangular array of numbers. So matrix में बहुत सारा operations होता है, okay, right? Like addition, subtraction, then you can do multiplication. So these are the basic things of linear algebra which comes under elementary linear algebra. Now coming to the advanced linear algebra. Now what is advanced linear algebra? So after learning the basics of linear algebra, we'll come to the part advanced linear algebra, where what we see some advanced concept related to linear equations, okay, vectors and then matrices. So those things will be there. Basics of linear algebra we have to learn, वो सब तो हमें मतलब आना ही चाहिए. देन उसका जो एडवांस यूजेज है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे, लाइक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, दिस इज वन, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स from one vector space to another vector space, there will be what? Some relation or some transformation. So ये एक अलग सा टॉपिक है, तो इसको हम लोग इन डिटेल में मतलब आफ्टर सम लेक्चर्स हम लोग इसको समझेंगे. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स दैट यू ऑल नो, राइट? इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज व्हाट? ए इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स दैट you know from your earlier classes. Then eigenvector, okay, eigenvector, eigen values. So this particular topic I have already make the lectures and it is available, so you just kindly go through it. Linear mapping means function. Okay, linear mapping means functions. So when you talk about linear, so it's a combination of vector or vector with some scalar. So those type of things we'll see under advanced linear algebra. And finally, after knowing basic or elementary linear algebra and advanced linear algebra, then comes applied linear algebra. So in applied linear algebra, it's nothing but this is nothing new. It's a combination of what? Elementary and advanced linear algebra, and all those concept, जितना भी concept हमें मिला मतलब basics linear algebra, basic linear algebra और advanced linear algebra में, so वो सब जो concept है वो हम लोग application मतलब apply कैसे कर सकते हैं in the real field, तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे. Okay, like norm of vector, then QR factorization. सो सपोज हमें कुछ मतलब इंजीनियरिंग और फिजिक्स में कुछ प्रॉब्लम करना है विद द हेल्प ऑफ लीनियर अलजेब्रा. सो देन वहाँ पे हम लोग जो लीनियर अलजेब्रा जितना भी कॉन्सेप्ट है उसका जो एक्चुअली जो एप्लीकेशन है वो हमें यहाँ पे दिखाई देगा. ओके, नाउ बिफोर गोइंग टू द definition of vector space, which is actually our main part. So before going to the definition of vector space, we have to understand certain term like addition of vectors. So vector क्या है? So vector मतलब suppose capital V एक non empty set है, is a non empty set. Okay, non empty set. So generally vector बोलने से क्या होता है? We need to talk about vector. It comes to our mind that it's a combination of direction and magnitude. बट यहाँ पे इन लीनियर अलजेब्रा में उसी कॉन्सेप्ट मतलब वो तो कॉन्सेप्ट है ही, बट सपोज V इज ए नॉन एम्प्टी सेट एंड सपोज दिस वेक्टर दिस पर्टिकुलर सेट इज ए वेक्टर स्पेस, देन द एलिमेंट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट आर कॉल्ड व्हाट? वेक्टर्स. सो कैपिटल V का जितना भी एलिमेंट है उसे हम लोग वेक्टर्स बोलेंगे. एंड विद दिस देयर इज वन न्यू थिंग कॉल्ड फील्ड. सो फील्ड जो है ये है फील्ड. तो इसका जो डिटेल है इसको ये आप लोगों को मतलब कहीं पे भी मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा, या तो मैं रिंग थ्योरी जब स्टार्ट करूंगा तो वहाँ पे मैं डिटेल में फील्ड के ऊपर एक मतलब लेक्चर बनाऊंगा. नाउ कैपिटल F इज अनदर सेट. तो F का जो एलिमेंट है वो है स्केलर्स. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग. एलिमेंट्स ऑफ V आर कॉल्ड वेक्टर्स. ओके, कैपिटल V का जो एलिमेंट है वो वेक्टर्स है और F का जो एलिमेंट होगा वो क्या होगा? स्केलर्स होगा. सो कैपिटल F इज ए सेट. सपोज आप लोग रियल नंबर मान लीजिए, कैपिटल F में जितना भी एलिमेंट है सब रियल नंबर है. तो दोज रियल नंबर्स आर कॉल्ड व्हाट? स्केलर्स. और यहाँ पे दो ऑपरेशन है, प्लस एंड डॉट. प्लस एंड डॉट. प्लस इज व्हाट? प्लस इज यूज फॉर वेक्टर एडिशन एंड डॉट इज फॉर स्केलर मल्टीप्लिकेशन. सो
f का जो एलिमेंट है वो क्या है, यहाँ पे क्या है, स्केलर्स है. सो टुगेदर v एंड f एक साथ कंबाइन करके कुछ एक्सियूम्स है और प्रॉपर्टीज है, सर्टेन प्रॉपर्टीज है यहाँ पे. दीज ऑपरेशन मस्ट सेटिस्फाई व्हाट, सर्टेन प्रॉपर्टीज. तो जो मैं थोड़ी देर में उसको इन डिटेल में आप लोगों को मतलब बोलूंगा. सो बिफोर दैट जस्ट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज कैपिटल V एंड व्हाट इज कैपिटल F. कैपिटल V इज ए नॉन एम्प्टी सेट, और उसके अंदर से नॉन एम्प्टी होने से क्या होगा, उसके अंदर एलिमेंट्स रहेगा. दोज एलिमेंट्स आर कॉल्ड व्हाट, वेक्टर्स. कैपिटल F is another set and elements of capital F are called what, scalars. सपोज मान लीजिए ये एक सेट है V और जो F है वो एक अलग सेट है. सो यहाँ पे क्या रहेगा, स्केलर्स, और यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर्स. These elements are called what, vectors. Now this capital V is said to be a vector space. जैसे कि यहाँ पे मैंने बार बार बोल रहा आपको फील्ड. सो फील्ड मतलब वहाँ पे कुछ कंडीशंस है. ओके आप लोग कहीं पे भी देख लीजिएगा, किसी भी एक रिंग थ्योरी का बुक लीजिएगा तो वहाँ पे या तो किसी वेक्टर स्पेस का जो बुक है उसमें भी आप लोगों को फील्ड का डेफिनेशन मिल जाएगा. तो यहाँ पे फील्ड मैंने जस्ट मतलब इसको पूरा डिटेल में अगर मतलब बोलूँगा तो ये बहुत टाइम लग जाएगा. तो फील्ड में क्या होता है, यहाँ पे भी कुछ कंडीशन, कैपिटल F कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, और वहाँ पे जो ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, प्लस एंड डॉट. सो इफ कैपिटल F सेटिस्फाइज सम कंडीशन देन F इज कॉल्ड व्हाट, फील्ड, एंड द एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल आर कॉल्ड व्हाट, स्केलर्स. तो यहाँ पे जस्ट आप लोग ये मान के चलिए, एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल F आर कॉल्ड व्हाट, स्केलर्स, एंड इन जनरली these elements are what, रियल नंबर. ओके, इन मोस्ट ऑफ द केसेस इज रियल नंबर है, और किसी एक दो प्रॉब्लम में हम लोग क्या क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर भी लेंगे. नाउ द सेट कैपिटल V इज सेड टू बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F. तो इसे हम लोग ऐसे लिखेंगे, V ऑफ F. V इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, अगर कुछ कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, जो हम लोग मतलब आगे जानेंगे. नाउ बिफोर गोइंग टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक और द डेफिनेशन, बाइनरी ऑपरेशन, ये थोड़ा हमें मालूम होना चाहिए. व्हाट इज बाइनरी ऑपरेशन? सो बाइनरी ऑपरेशन वी ऑल नो बिकॉज आवर डेली बेसिस वी आर यूजिंग प्लस, मल्टीप्लिकेशन, राइट, देन डिविजन. These particular operations are nothing but what, binary operation. So there are two types of binary operation. तो हमें दो टाइप का बाइनरी ऑपरेशन देखने को मिलेगा. One is internal binary operation, and another one is what, external binary operation. So binary operation मालूम है, जैसे कि हम लोग देखा ना 1 + 2. So 1 + 2 equals to how much, 3. So this how we combine these two element 1 and 2 with the help of plus. So this operation is binary operation. So when we say a binary operation is external and internal, suppose F is a function from A cross A to A. Now here what is the domain? Our domain is A cross A, and जो codomain है वो क्या है, A. Now A cross A means what, Cartesian product. So you all know what is Cartesian product. Cartesian product में क्या आता है, ऐसे ऑर्डर पेयर टाइप का एलिमेंट रहता है, ए बी. तो ये जो फंक्शन है, सपोज मान लीजिए ए है एफ. सो इफ वी टेक ए एलिमेंट ऑर्डर पेयर ए कॉमा बी, सो व्हाट विल बी द इमेज हियर? सो इट विल बी ए स्टार बी. ओके, ए स्टार बी इज ए सिंगल एलिमेंट. सो नाउ सी आवर डोमेन इज ए क्रॉस ए, एंड व्हाट इज द कोडोमेन? कोडोमेन इज ऑल्सो ए. यहाँ पे नया सेट नहीं आएगा, मतलब नहीं आया. इफ दे आर ऑल सेम, ए टू ए, then this is called internal division. Then this particular operation जो f है, इसको हम लोग यहाँ पे स्टार भी लिख सकते हैं. Suppose this star is internal, but suppose this is r cross r, and so let us take this is v cross f, and this is suppose v. Now see here, one more extra set is coming here, F. One is V is one set and F is another set. अगर यहाँ पे दो अलग अलग सेट होगा, then elements तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ऐसे आएगा. So it will be, if the operation is star, then it will be what, A star B. But the thing is that here you see we have seen one different set F. So capital F जो है यहाँ पे देखिए आप, ये बाहर का सेट. So that's why this particular operation is called what, external. But here both A and A, so both are same set.
So that's why the operation is what? Internal. Okay. So अब आप लोग a प्लस b माइनस c, सो यहाँ पे प्लस और माइनस दो बाइनरी ऑपरेशन है. अगर दो ये a b c, सपोज a b c they are from same set, then these operations are internal operation. सपोज a प्लस b माइनस c ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे a b सपोज मान लीजिए b से है और c हम लोग कहाँ से लिया? f. So then these operations, this type of operations are what? External operation. Okay, so it's clear what is binary operation. Now coming to the main part, which is the definition of vector space. So आगे जितना भी सीरीज मतलब हम लोग जो जितना भी लेक्चर्स हम लोग देखेंगे, तो सारा में हम लोग वेक्टर स्पेस का वेराइटीज वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे. व्हाट इज वेक्टर स्पेस, देन सम एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेस, देन आएगा सब स्पेस, देन वहाँ पे एग्जांपल्स ऑफ सब स्पेस रहेगा, लीनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट. सो बहुत सारा टॉपिक है, तो आप लोग मतलब सीरियली इसको एक एक करके मतलब देखते रहिए. सो विद इन ए वेरी शॉर्ट टाइम आई विल अपलोड द होल लीनियर अलजेब्रा सीरीज. Now it's very important, what is the definition of vector space. Now see what is vector space. For vector space we need a non-empty set. Okay, we need a non-empty set V. So when you talk about non-empty means what? Inside capital V there must be at least one element. Okay, there must be at least, this is non-empty. Non-empty means there will be some element. Now what we said earlier, element of capital V are called what? Vectors. Over a field F, that means we need another set, another external set, which is F, and in F there will be some element. And what is the operation inside F? The operations are plus and dot. In capital V operation may be anything else. Okay, capital V में कुछ भी operation मतलब हो सकता है, but in F the operations are only but plus and dot. Plus and dot. So with these two operations, what we say? Capital F is a field. Now we see two different sets. One is capital V, where the elements are vectors, and another set which is capital F, and the elements of capital F are called scalars. Now if this capital V together with F satisfy 10 conditions or axioms, then we say that V is a vector space over the field F. So how we can write this? V of F. V over the field F. So if we write V over R, then here we say that V is a vector space over the real number. तो यहाँ पे जो जितना भी स्केलर होगा, those scalars will take from R. Sometimes you will see like this, R square of R. So in place of V, now it is R square. R square मतलब two dimensional element. तो यहाँ पे जो vectors है वो कहाँ से लेना है? R square से लेना है. और जो फील्ड है, फील्ड का जो एलिमेंट है वो कहाँ से लेना होगा? आर से लेना होगा. सो दिस पर्टिकुलर थिंग्स विल अंडरस्टैंड बट इन एग्जांपल्स ऑफ वेक्टर स्पेसेस. ओके, नाउ ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द डेफिनेशन. सो कैपिटल V इज ए नॉन एम्प्टी सेट ओवर द फील्ड F. दिस पर्टिकुलर फील्ड F आइदर इज रियल और व्हाट? कॉम्प्लेक्स. तो यहाँ पे रियल नंबर भी हो सकता है या तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है. इक्विप्ड विद टू ऑपरेशंस. ओके, सो कैपिटल एफ के अंदर जो ऑपरेशन है वो क्या है? प्लस एंड डॉट. सो यहाँ पे वेक्टर्स में भी हम लोग क्या लेंगे? दो ऑपरेशन लेंगे, प्लस एंड डॉट. ओके, तो यहाँ पे मैंने बोला था जो इन कैपिटल वी हैव एनी अदर ऑपरेशन ऑल्सो, सो इट्स नॉट लाइक दैट. इन कैपिटल वी ऑल्सो वी हैव टू ऑपरेशन, वन इज प्लस एंड व्हाट? डॉट. सो विद द हेल्प ऑफ दिस टू ऑपरेशन प्लस एंड डॉट, देयर विल बी सम कंडीशंस. ओके, नाउ इफ कैपिटल V satisfies all these conditions, 10 conditions, then we can say that capital V is a vector space. Now what are the condition? Now first condition is very easy. Take any two element from capital V. यहाँ से कुछ भी, यहाँ पे thousands of elements हो सकता है, right? और infinite number of elements हो सकता है. So take two elements, any two element from V. Okay, suppose V1, V2 belongs to what? V. Take any two element from V, उसको add कीजिए, V1 plus V2. So after addition you will get a new element, right? So this particular new element should come in V. उसको वहाँ पे रहना है. जैसे कि अगर हम लोग दो रियल नंबर लेंगे, सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ही रियल नंबर, सो वो कहाँ पे रहेगा? अगेन सेट ऑफ रियल नंबर में रहेगा. सो दैट प्रॉपर्टी मस्ट सेटिस्फाई. ओके, सो टेक एनी टू एलिमेंट फ्रॉम V, एड देम, एंड दैट पर्टिकुलर एडिशन शुड कम अंडर व्हाट? V. वो वहाँ पे मतलब आना पड़ेगा.
So this particular condition is called closure property under vector addition. Now condition number 2, closure property under scalar multiplication. Now here what we'll do, we'll take a element from vector from V, okay, one element from V and one element from field. So alpha जो है, this particular alpha will come from F. Multiply them, alpha into V. Now this is scalar यहाँ पे multiplication है. So alpha is scalar and V is what? Vector. So that's why it is called scalar multiplication with vector. Okay, this particular element ये जो है ये भी V में आना पड़ेगा. So first condition you see, when you add two vectors, this should be in capital V. Take one element from vector and one from field, multiply them, and this should be what? Come under V. So these are the two basic conditions. Apart from these two conditions, there are some other conditions like commutativity in addition. Okay, commutative property means what? V plus W equals to W plus V, like 1 plus 2 is equal to 2 plus 1, right? 1 plus 2 कितना होता है? 3. If we do 2 plus 1, then also we'll get what? 3. So here V and W, these are elements from V. So यहाँ पे लिखा हुआ है U, V, W are any element. Arbitrary means any element from V, and alpha, beta are any scalar from F. Okay, so this is called commutative property. Then associative of addition. So associative addition, you see, suppose 1 plus 2 plus 3, if I ask you what will be the answer? 6. Now how you add them? First 1 plus 2 and then 3. या तो हम लोग ऐसे भी ऐड कर सकते हैं. First 2 plus 3 and then what? 1. So whatever way you add it, the result will be what? 6. So this particular property is called what? Associative property. Then existence of additive identity or zero vector. Existence of additive identity or zero vector. Now let us try to understand what is this existence of identity. So ये क्या है? Existence of identity. Suppose there is an element in capital V. So capital V से हम लोग एक element लेंगे V. और there must be some element like this. यहाँ पे हम लोग zero bar मतलब लिखे हैं. So zero bar may be anything. Okay. So यहाँ पे that particular element is denoted by what? Z. So zero bar belongs to what? V. Now if we add V and zero bar, the result will be what? V. So zero bar will not come. Here you see Z plus V is equals to what? V. So Z is not coming. So the element which is not coming is called what? Zero vector. Okay, जैसे कि नंबर में होता ना 5 plus 0 कितना आएगा? 5. तो हमें मालूम है 0 का कुछ वैल्यू नहीं है, इसलिए 0 मतलब वहाँ पे काउंट नहीं होता है. So similarly in this particular set also there must be one element like this. Set of natural number vector space नहीं होगा. Okay, the set of natural number is not a vector space because set of natural number में 0 नहीं है. तो अगर नेचुरल नंबर हम लोग लेंगे 5 के साथ क्या ऐड करने से 5 आएगा? सपोज 0. सो 0 तो नेचुरल नंबर नहीं है. सो सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज नॉट ए वन वेक्टर स्पेस. नाउ प्रॉपर्टी नंबर 4. व्हाट इज प्रॉपर्टी नंबर 4? सपोज इफ वी टेक वन एलिमेंट V फ्रॉम कैपिटल V, देयर मस्ट बी अनदर एलिमेंट माइनस V. जैसे कि सपोज मान लीजिए 5. सो 5 के साथ क्या ऐड करने से 0 बार आएगा? सो दैट इज व्हाट? -5. So if 5 is an element, then -5 should also belongs to capital V. -5 को भी वहाँ पे रहना है. So again you see set of natural number. ये वेक्टर स्पेस नहीं है क्योंकि अगर 5 हम लोग लिए, so for 5 -5 भी रहना चाहिए, but -5 is not a natural number. Okay. So this is called existence of additive inverse. So if V is there, then -V should also be there. And addition of V and -V is what? 0 bar. तो यहाँ पे तो 0 bar नहीं लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? Z. Okay, so this you can write like this, 0 bar plus V is equals to V equal to 0 bar plus V. So then this particular element will be like this, V plus minus V equal to how much? 0 bar. Or you can take, or you can denote by any other variable, like here we are denoting by Z. And then these properties you all know from your earlier classes. Distributive of scalar multiplication over vector addition. Suppose alpha into V1 plus V2. So how will you write it? Alpha V1 and then what? Alpha V2. So alpha जो है ये alpha क्या है? ये है स्केलर
और v1 और v2 क्या है, वेक्टर। तो यहाँ पे हम लोग एक स्केलर से वेक्टर एडिशन जो उसको हम लोग मल्टीप्लाई किए। So this particular property is called distributive property of scalar multiplication over vector addition. Okay. The second property number 6 is this. This is also distribution property. Now it is scalar addition with vector multiplication. Scalars what? Scalar addition with, it should be vector multiplication. Okay. Scalar addition over vector multiplication. So what is the property? Scalar addition, alpha plus beta. And then with this we multiply one vector, so it will be alpha v plus beta v. And then last is associative property. Okay, associative property but for scalar multiplication. जैसे कि हम लोग यहाँ पे भी देखे थे associative property, u plus v plus w is equal to u plus v plus w, but here only addition is there, but here now multiplication, and in multiplication it's a combination of scalar and vector. Alpha beta into v is equals to alpha into beta v. So if you find left side separately and right side separately, they must be what? Same. The last property is what? Existence of multiplicative identity. Like यहाँ पे क्या था, zero bar क्या था, zero bar is additive identity, so there should be one also. One is called multiplicative identity. So scalar multiplication is one. Like you see 1 into v, तो हमें सबको मालूम है 1 into v क्या आएगा, v. So 1 is not coming. So that particular one is called what? Multiplicative identity. Okay. So if all these 10 condition is satisfied by v, अगर कैपिटल v यहाँ पे जितने भी 10 कंडीशन है, सारा 10 कंडीशन का अगर सेटिस्फाई करेंगे, तो then we say that v is a vector space over the field what? F. Okay. We can say that then v is a vector space over the field what? F, and this is denoted like this, v of f. So definition is very simple. Number of condition is more, 10 condition, but this definition are very simple. So what is the first condition? Take 2 element from v, add them, it should be in v. Second condition क्या था? 1 element from v, 1 element from field, multiply them, it should be again in v. Then commutative property, associative property, existence of additive identity, additive inverse. So simple सा कुछ properties है. So if a set capital V के जगह में कुछ भी हो सकता है, if a set capital V satisfies these 10 conditions, then we say that the set is a vector space over the field F. क्योंकि हमें कभी कभी कुछ अलग नंबर चाहिए जो कि है स्केलर, तो स्केलर हम लोग कहाँ से लेंगे? फील्ड से लेंगे. ओके. नाउ डिपेंडिंग ऑन द फील्ड, अगर फील्ड जो है वो रियल नंबर है तो हम लोग बोलेंगे रियल वेक्टर स्पेस, और अगर जो फील्ड है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन दैट विल बी व्हाट? कॉम्प्लेक्स वेक्टर स्पेस. ओके. सो इन आवर नेक्स्ट लेक्चर we'll learn or we'll take some examples of vector space and we'll try to show that for what condition those examples or some problems will satisfy all the 10 condition of what? Vector space. Okay. So I hope the definition of vector space is very clear to all of you. So thank you for watching today's video. Now if you found this lecture helpful, then kindly subscribe and share with your friends so that others also gets the knowledge that you are gaining, and also hit the notification bell so that you'll get all the latest updates or all the upcoming videos on linear algebra. And if you have any query, then kindly post in the comment box. I'll try my best to give the answer. And also you just comment after linear algebra what topic you need the most so that I can make some videos on that particular topic also. So thank you once again for watching, and have a good day.